Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to discuss Polluter Pays Principle, a basic topic of environmental law, and it is like one of the environmental policy. Okay, so the Polluter Pays Principle, so-called PPP, is an environmental policy principle which regulates that the cost of pollution be borne by those who cause it. Means जो pollution create करता है उसके द्वारा borne किया जाता है. Okay. Now if you haven't subscribed my channel, then please subscribe. So now come to the history. So the Polluter Pays Principle was first introduced in 1972 by the Organization for Economic Cooperation and Development, in so-called like OECD in short form. Okay, so guiding principle concerning international economic aspects of environmental policies, where under the polluter was held responsible for the environmental damage and pollution. Subsequently, the Rio Declaration laid down the guidelines for sustainable development. Basically, पहले ये जानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल्स है ना, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत सारे हुए उसमें से रियो डिक्लेरेशन भी है. यू मस्ट रिमेंबर. सो कम टू लाइक subsequently the Rio Declaration laid down the guidelines for sustainable development, meaning thereby a strategy to cater the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation. In furtherance the aim of sustainable development, Rio Declaration principle section. As you know, there are many principles under Rio Declaration. Further on, when we will discuss the topic Rio Declaration or some of the important international event, then on that time I will make you understand. Okay, so Rio Declaration inserts the polluter pays principle, stating that polluter should bear the cost of pollution. Means इसके principle 16 में ये बताए गए हैं that polluter should bear the cost of pollution. जो pollution क्रिएट करता है उसको ही बियर करना पड़ेगा. अब इसके कुछ हिस्ट्री और भी अगर जानना चाहोगे तो इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसको समझ सकते हैं लाइक PPP इज टुडे वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी. ओके, यूरोपियन कम्युनिटी की अगर बात करें सो द यूरोपियन कम्युनिटी में क्या है कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है यूरोपियन कम्युनिटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर. ओके, बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें. सो अभी क्या है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, अब ये EPR क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो इसमें क्या है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में in this like producer will improve the waste profile of their products. अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बना रहा है then producer will improve the waste profile of their products which producer is manufacturing, and thus decreasing waste and increasing possibility for reuse and recycling. Okay, मतलब वेस्ट को डिक्रीज करेगा प्रोड्यूसर और रिसाइकलिंग और रीयूज को बढ़ावा देगा. ओके, मीन्स इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी for reuse or recycling. Okay, the concept, the polluter pays principle imposes liability on a person who pollutes the environment to compensate for the damage caused and return environment to its original state regardless of the intent. Okay, I think this definition is clear. View of the Indian judiciary. The Indian judiciary has incorporated the polluter pays principle as being a part of the environmental law regime is evident from the judgment passed. First judgment like Indian Council for Enviro Legal Action versus Union of India 1996. The court held that once the activities carried on is hazardous or inherently dangerous. Okay, means if you are dealing in a hazardous or inherently dangerous activity, the person carrying on such activity is liable to make good the loss. Okay, good the loss caused to any person by his activity irrespective of the fact. Okay, whether he took responsible care ये फैक्ट मतलब इरिस्पेक्टिव है कि वो चाहे तो वो रिस्पॉन्सिबल केयर लिया होगा
लेकिन उसने नुकसान अगर किया है हैजार्डस एक्टिविटी में अगर डील करता हो, सो वाइल कैरिंग ऑन हिज एक्टिविटी द रूल इज प्रीमाइज्ड अपॉन द very nature of the activities carried on. Okay, so the rule is premised upon the very nature of the activities carried on. In this case, basically the court held that once the activities carried on in any hazardous activities or any dangerous activity, the person carrying such activity is liable. Okay, if any loss will occur. So second case is Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India 1996. The court interpreted the meaning of Polluter Pays Principle in this case. Okay, Polluter Pays Principle का जो मीनिंग है उसको बताया कोर्ट इन दिस केस एज द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर हार्म टू द इन्वायरमेंट एक्सटेंड्स नॉट ओनली टू कंपनसेट द विक्टिम्स. केवल विक्टिम को कंपनसेट ही नहीं करना है, अगर आपने हैजार्डस या किसी तरीके का डेंजरस एक्टिविटी में अगर डील कर रहे, फैक्ट्री सेटअप कर रखे हैं, अगर आपने विक्टिम को कंपनसेट किया है उसके लिए आफ्टर जो भी अकर हुआ है, सो ऑफ द पॉल्यूशन बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. जो आपने इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाया है उसका भी कंपनसेशन देना पड़ेगा, केवल विक्टिम को ही कंपनसेशन नहीं देना है. Okay, so it is not only to compensate the victim of the pollution but also the cost of restoring the environmental degradation. So remediation of the damaged environment is part of the process of the sustainable development, and as such as the polluter is liable to pay the cost of the individual sufferers as well as the cost of reversing the damaged ecology. Okay, ये भी important है that reverse the damage what the damage occur to the environment और environment pollution जो create किए हैं उसको कहीं ना कहीं reverse करना है. So third case law is oleum gas leak case, MC Mehta versus Union of India. There are so many case laws in when we read constitutional provision or constitutional guidelines regarding the environmental laws or regarding the environment. So MC Mehta के case law बहुत सारे case law हैं इसमें, तो MC मेहता के सारे केस लो आगे फर्दर ऑन जो लेक्चर्स हो गए उसमें पढ़ेंगे. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओलियम गैस लीक केस, थर्ड केस हियर. सो द कोर्ट लेड डाउन दैट एन enterprise engaged in hazardous or inherently dangerous industry which poses a potential threat to the health and safety of persons working in factory and those who residing in the surrounding areas owes an absolute and non-degradable duty to the community to ensure that no harm results to anyone on account of hazardous or inherently dangerous nature of the activity which it has undertaken. The enterprise is absolutely liable to compensate for such harm and irrespective of all reasonable care taken on his account. The larger and more prosperous the enterprise, greater must be the amount of compensation payable for the harm caused on account of an accident in the carrying on hazardous or inherently dangerous activities by the enterprise. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि जो कोर्ट ने लेट किया कि इंटरप्राइज लाइक कोई भी हैजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री को बना रखा है और उससे अगर किसी को नुकसान होता है उसको अपने सेफ्टी मेजर्स लेकर चलना है. जो फैक्ट्री वगैरह और जो सराउंडिंग जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए भी सेफ्टी मेजर्स लेकर चलना है और जो सराउंडिंग है उसके लिए भी लेकर चलना है. लेकिन अगर किसी कारणवश अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे बहुत सारे लोगों जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान होता है, सराउंडिंग्स जो रह रहे हैं उनको भी नुकसान होता है, तो ये कहा गया कि जितने बड़े इंटरप्राइज होंगे, द ग्रेटर द एंटरप्राइज द ग्रेटर द कंपनसेशन. ओके, जितने बड़े इंटरप्राइज होंगे उतना ज़्यादा कंपनसेशन होगा. मीन्स द लार्जर एंड मोर प्रॉस्परस द एंटरप्राइज द ग्रेटर बी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन payable to the harm caused on account of accident in carrying on hazardous or inherently dangerous activities by the enterprise. कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा इंटरप्राइज होगा और उसने अगर नुकसान किया है किसी का भी एक्सीडेंटली तो उतना ज़्यादा कंपनसेशन कोर्ट उसको दिलवाएगी. सो फोर्थ केस इज MC Mehta versus Kamalnath. The court held that pollution is a civil wrong. Okay, pollution is a civil wrong and is a tort committed against the community as whole. Means it is a wrong committed, civil wrong which is committed against the community as a whole. Thus any person guilty of causing pollution has to pay damages or compensation for restoration of the environment and ecology
if there is degradation of environment, then for the restoration of the environment and ecology, the compensation is to be paid. Under the polluter pays principle, it is not the role of the government. It is not only role of the government to meet the cost involved in either prevention of such damages or in carrying out a remedial action, because the effect of this would be to shift the financial burden of the pollution incident to the taxpayer. ओके, सो यहाँ पे केवल ये बताया गया कि ये एक सिविल रॉन्ग है जो कमिटेड किया जाता है अगेंस्ट द कम्युनिटी एज अ होल, इतना याद रखना है. एंड यहाँ पे ये कहा गया कि गवर्नमेंट इसके लिए नहीं बियर करेगी, इसके लिए बियर करेगा जो गलती करता है उसको बियर करना पड़ेगा इसके लिए. और अगर इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया है तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये कंपनसेशन दिया जाएगा. ओके, सो come to the conclusion, like although the polluter pays principle has helped to mitigate the damage being caused to the environment to some extent, the provision remains an inadequate remedy as a ambiguity persists regarding to clear identification of actual polluter. क्योंकि ये ambiguity होती है कई बार कि क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है जो एक्चुअल पॉल्यूटर कौन है. ओके, अस्पष्टता होता है, एम्बिग्विटी होता है कि क्लियर पॉल्यूटर मतलब कौन है, इसको पता करना होता है. सो द पॉल्यूटर में अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन चेन का हिस्सा होता है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्पोज द लाइबिलिटी ऑन सच पॉल्यूटर व्हेन द कोर्ट्स कंसिडर द पैरामीटर्स ऑफ एक्सटेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉजिंग पॉल्यूशन. मोर ज़्यादातर क्या होता है अंडर दिस प्रिंसिपल, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी चार्ज फॉर द रिस्टोरेशन of the damage caused to the environment remains to be inadequate in comparison to the loss actually caused. More effective and unambiguous provisions with regard to the implementation of the polluter pays principle would be beneficial in the longer run. I think clear हो चुका है आज का टॉपिक. So thanks for watching. This is Deepak Nandan signing off.